breakfast? Can I have that light a little less? It's hitting my eye. That light is not good. Yeah, but look for your feedback on it. Sir, are you comfortable with it? पहले बहुत बुरा था yeah, you know the angle of the light is not, it's still hitting my eye. So when I look up now, it's disturbing. VP, can you get our company secretary here? Ajay Sharma. Ask Ajay Sharma to come.
Gentlemen, please be seated. We have two of our directors who are stuck in traffic and running late. But as per the advice of my director on the dais, we tend to start sharp at 10 a.m. Yeah, so I'm going to start the proceedings in exactly 4 minutes. So if there are any shareholders outside, if you can please ask them to come into the hall. We want to start on time. Hi, Vibha. Please be seated. We'll be starting very, very shortly. I hope you all are comfortable and a good breakfast. Yes? Usual. Great. Pratik, are there shareholders outside the room? You can ask them to please come inside. Where's Bharat? Achha, he's here. Bharat is here. Please be seated. We'll be starting shortly. From the control, can you just dim the lights a little bit more? The top right, on the left and the right. It's still hitting my eye. Very slightly, if you can still dim it. Okay. So just start straight. We can, let's... 10 o'clock sharp, I'll start. So then we start. Your introduction where the director, specific director comes, we'll skip that part of it. The introduction part, we'll ask them, once they settle down, we'll introduce them. No, I will then not introduce this. When he comes, I'll introduce again. Including Hardeep sir. Hardeep को यहाँ मुझे बता देना when he comes. ठीक है. So, gentlemen and ladies, I'd like to start the official proceedings of the annual general meeting of your company. We are exactly a few seconds away from 10 a.m. We are still awaited presence of two of our directors, Mr. Hardeep Singh and Mr. Sneelkant Majal. They are stuck in traffic and they should be arriving in the next 5 to 10 minutes, but we would like to start on time. So, dear share owners, on behalf of the board of directors and every Escortians, I welcome you all to the 73rd annual general meeting of your company. To encourage wider participation, this meeting is on live webcast. Members may post their queries in the message box provided on the screen, and we shall appropriately respond to the same post the annual general meeting. The entire proceedings are being recorded. Taking the meeting forward, I have a pleasure in introducing the members who are present on the dais. On my extreme right is Mr. Bharat Madan, our Group CFO and Corporate Head. Mr. Madan is a fellow chartered accountant with over 31 years of experience and is a key player of the Group Management Committee and also leading strategy, M&A, and other inorganic growth initiatives within the group. Next to Mr. Madan is Mr. Shailendra Agarwal, your newly appointed Executive Director. Mr. Agarwal is a mechanical engineer with 35 years of diverse experience in Tata Motors, Hero Motors, Escorts Limited. As Executive Director, Mr. Agarwal will be leading group-level business growth and profitability. Kindly join me in congratulating and wishing Mr. Agarwal for taking over this position. Thank you. Next to Mr. Agarwal is Dr. Satanu Bihoria. Dr. Bihoria is an IAS from the 1976 batch.
He has served as a secretary in the Department of Fertilizer, National Disaster Management Authority, Ministry of Minority Affairs, Department of Heavy Industries. He has been the financial advisor to the Ministry of Commerce, Textile, Coal, Mines, Youth Affairs, and Sports in the Government of India. Next to Dr. Bihoria is Ms. Vibha Paul Rishi. Ms. Rishi is a seasoned marketing professional with vast experience in Indian and international markets at PepsiCo and held the position of the Executive Director, Brand and Human Capital in Max India Limited. Next to Ms. Vibha Rishi is Mr. P.H. Ravi Kumar. Mr. Ravi Kumar, besides being a founder, managing director, and CEO of National Commodity and Derivative Exchange, had worked in several positions in ICICI Bank and Bank of India. He's the chairman of Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee of your company. On my extreme left is Mr. G.B. Mathur. Mr. Mathur is a part of all major restructuring and other important corporate decisions taken by the company from time to time. Mr. Mathur currently looks after skill development initiatives of the company. Next to Mr. Mathur is Ms. Natasha Nanda. Natasha is a multifaceted professional, entrepreneur, and business leader with a wide range of experience in Indian companies. She is looking after your company's subsidiaries. Mr. Manjal is awaited, so I will introduce him once he joins us. So I will go to Mr. Kakalia. Mr. Kakalia is a qualified solicitor from Mumbai and the Supreme Court of England. He is presently a partner in Mulla & Mulla, Mumbai. Next to Mr. Kakalia is Mr. Hardeep Singh. Mr. Singh was a former executive chairman of Cargill South Asia and Amalgamated Plantation Private Limited, a Tata enterprise. A non-executive chairman of HSBC Invest Direct India Limited. Mr. Singh is chairman of Stakeholder Relationship Committee of the company. On my right is Mr. Ajay Sharma. Mr. Ajay Sharma is a general counsel of your company and also the company secretary of your company. Sitting amongst you is also Mr. Shenu Agarwal, CEO of Escorts Agri Machinery. He's driving a transformative sales and marketing initiatives along with discovering new growth engines for your company's agriculture business. Mr. Ajay Mandar, CEO of Construction Equipment Business, is also amongst us. He is steering sales and marketing products of our construction division and transformatively is growing the business to the next level. Mr. Dipankar Ghosh, CEO of Railway Equipment Division, is leading the Railway Equipment Division and enhancing a frugal engineering excellence in the railway segment. Mr. Siddharth Talwar, partner from Walker Chindyok and Company LLP, our statutory auditors, are also amongst us. Mr. Shobhit Kumar, director, along with his team from Ernst & Young, our internal auditors, are also amongst with us. And Mr. Jayant Gupta, practicing company secretary, secretarial auditor of the company, is also present amongst us. A warm welcome, and once again, I welcome you to the 73rd Annual General Meeting of Escorts Limited. I want to thank all the stakeholders for your continued trust and patronage. I also want to thank all the board of directors for their valuable guidance in shaping the future of your company. I will give you some highlights on the operational performance of the company and would also cover some strategic initiatives that your company has undertaken to drive our growth agenda. FY19 proved to be a landmark year in Escorts history. In FY19, we did our highest ever volume. We grew amongst the fastest in terms of speed amongst the tractor players in the country, and we made a record profit. Some of the highlights are as follows, and you can see it on the screen. We achieved a consolidated annual revenue of 6,262 crores, up by 23.3% as compared to last year. We touched higher ever volume of 96,412, up by 19.9% as compared to last year. Market share in tractors reached 11.8%, which was 100 basis points more than last year. Construction equipment volume grew even better than tractors at 5,544, up by 23.6% as compared to last year. Railway business stole the show. Order book growing by 40%. Company's EBITDA was at a record at historic high at 724.5 crore, up by 30.9%. Consolidated net profit at 477.9 crores, which was up by 37.9% as compared to last year. The Board of Directors proposed a dividend of 2.5 per share. Thank you.
Indeed, a satisfying year of performance. Today, your company is very agile. The current average age of managerial grade is 36 years as compared to 42 years plus, which was about 5 years back, as you can see on the screen. So we're doing our best to energize the company and bring in the young, and we will continue to do so. I want to take this opportunity to thank everyone who helped to make this happen. Our customers, share owners, channel partners, suppliers, all our employees across the plants and offices. I want to thank all the stakeholders from the bottom of my heart for a stupendous hard work, passion, unstinted support to bring this record performance of FY19. Along with this special acknowledgement to my leadership team at the GMC, who are also present in the hall, for their support and alignment and for their ambition to take the company to the next level, and also for shaping the vision of 2022. I'm happy to say that your company is steadfastly moving to achieve its vision for 2022. I want to highlight here some of your company's strategic initiatives that we believe will lay the roadmap for our future success. Let me start with agribusiness. Your company entered a relationship with one of the world's leading and globally most respected agri-equipment company, Kubota Corporation of Japan. Through this deep and wide-ranging partnership, Escorts and Kubota will set eyes on achieving a global leadership by working very closely together. Some of the highlights of this partnership are as follows. Escorts shall get access to Kubota's global channel, which will help us to build our volumes in overseas markets. As you can see on the screen, Escorts products sold through Kubota overseas network will be jointly branded as e-Kubota. I'm just pausing so you can get a deeper insight and view of the products. It's colored in orange, which is Kubota colors, and it's going to be jointly branded as e-Kubota. In partnership with Kubota, as you can see on the screen, a new manufacturing facility in Plant 1, Faridabad, is coming, which will be one of the global best. We will be building a capacity of 50,000 tractors, of which 60% would be used for Escorts products. Therefore, the overall capacity within the group will grow from the current level to 170,000 tractors. Escorts and Kubota shall jointly develop products to cater to the world markets. Escorts will further excel by adapting Japanese practices of quality, productivity, and through this partnership, while hoping we can teach Kubota about the Indian frugality. With a focus of attaining a higher market share and unlocking true potential for both our brands of Farmtrac and Powertrac brands, in FY19 we continued to follow the dual brand strategy in the Indian market. Both the Farmtrac and Powertrac are now offered through a different channel partners in at least 6 states of the country. In this process, we enhance our reach by appointing more than 200 new dealers in FY19. Gentlemen, I'll take a pause, and I'd like to welcome Mr. Sunilkant Munjal, who has just joined us. It's a pleasure to have him on our board, and he's a newly appointed director. And I'll just give a brief introduction. As you all know Mr. Munjal and his family very, very well. Mr. Munjal is one of the founder promoter of the Hero Group, India's premier automotive manufacturing group that has evolved from being the world's largest bicycle maker to the world's largest two-wheeler maker. He's the chairman of Hero Enterprise with interest in insurance, distribution, steel making, real estate, corporate training. And on behalf of the stakeholders, I welcome Mr. Munjal on your board and thank him for extending his mentorship and support to the company. So again, I'll start on the domestic. With focus on further attaining higher market share and unlocking the true potential of both Farmtrac and Powertrac brands, in FY19 we continue to follow the dual brand distribution strategy in the Indian market. Both Farmtrac and Powertrac are now offered through a different channel partners in at least 6 states of the country. In this process, we enhance our reach by appointing more than 200 new dealers in FY19. We pioneered the first concept of online tractor sales in India through a brand called DigiTrack brand. Tractors, implements, parts, financing are now available online to all our farmers in Punjab. This is happening for the first time in India and probably in the world. As you can see, we have launched a new feature called 24/7 Care Button for customer service across entire range of Powertrac and Farmtrac. Now all our customers can just press a button on their tractors any time of the day and get technical help or any assistance that they may require. We also made a significant step to bringing in innovation in several areas. A few to name would be visualizing part distribution through our new initiative called Parts Easy,
purchase and sale of used tractors through our project called Mole Unmole, online tractor aggregation platform called Traxi, our mechanization service solution initiative called Escorts Crop Solution. Your company invested and benefited from new products and technologies. As you can see on the screen, we launched a new compact series of tractor called Atom, which became a craze not only in India but also in exports. I'm happy to report that Atom, in a very short period of time, already constitutes 10% of our total export volume, and it's increasing. Also happy to share that our new rice special four-wheel drive tractor is making a significant inroads into the rice market of India. Euro 50, launched a few years ago, I'm happy to share, has become one of the fastest models that has grown to the volume that it has, and we also won an award of Indian Tractor of the Year award. Let us now turn our focus in construction equipment business. On the back of several new products, efficiency improvements on the back-end operation, and better market reach, construction equipment volume grew even better than tractors at 5,544, up by 23.5% as compared to last year. In FY19, the business launched multiple new products, and you can see on the screen a new category of safe Hydra cranes. And this is one of the, if you can go back, this is one of the most innovative and cutthroat platforms which will replace inevitably in the future the pick and carry cranes. Our new compactor at 11-ton category. Recently also launched the Jungli Next, which is our backhoe loader, a 2-year warranty, which is amongst the first of its kind in the industry. Doosan, a new brand of excavators, which we have launched in the Indian markets. And we are shortly launching machines in higher tons to expand into newer segments. Dealership strength has been growing, and we are ensuring that we have an extensive coverage to cater to our customers. Also, our relationship with the Japanese partner, Tadano, has now started producing state-of-the-art machines of slew cranes. We are determined to make construction equipment a significant business with good profitable goals. Briefly, I would like to touch upon the railway business. This is the best growth story in your group. The business grew by a phenomenal 37.5%, surpassing growth rates of both agri and construction businesses. We are very buoyant by the prospects of the railway business for the future as well. In the recent budget, ever highest capital expenditure was allocated at 1.6 lakh crore, and it was announced in FY20, which gives further thrust on the infrastructure spend. In railway business, your company invested to add new product segments of axle-mounted disc brakes for LHB coaches. This, we believe, has a very good revenue and margin potential for the future. As you can see, bogie-mounted brake system on the screen, BMBS, we already have Part 1 approval in place, and we see a good order book for this product too in the future. We are working on new relationship to add to our technology base, one of which is for high-end braking system for Train 18. You all must have heard of Train 18. It's absolutely cutthroat new train systems, and we are also prepared technologically to supply. And to metros and high-speed train segments, which we have tied up with a company from Yujin from South Korea. Order book for this division stood at approximately 490 crores as of 1st April 2019, which will get executed in the next 14 to 15 months time frame. We will continue to invest in our research and development to expand on current and new product segments to capture the great opportunity that the Indian railway segment has to offer. And also in times to come, we will also look at opportunities of getting into international markets and imports. The way forward, as the data on the screen shows, during the last 3 years, we've had a very sharp jump on the tractor industry growth volumes from 4.9 lakh tractors in FY16 to nearly 7.9 lakh tractors in FY19, which means 60% jump in domestic industry volume. After hitting the historical high of 7.9 lakh tractors in FY19, industry is now facing some downward trends. In the short term, we expect this to continue. But despite this, your company is geared up to mitigate these trends by focusing on improving product mix, enhancing market penetration for both farm track and power track brands in the opportunity markets of India. We want to be a pan-India player, and we will do to increase our presence in the western and the central and the southern part of the country. Consolidating position in our export markets and opening newer markets, and enhancing market share and eliminating waste wherever we see it in the company. And implement business is also a new initiative that your company has embarked on.
initiative called SHIP, S-H-I-P, which stands for Sprayer, Harvester, Implement, Planters. India has seen a lot of tractorization, but lacks and has done very, very little on the mechanization side. So therefore, your company is investing on the total mechanized solutions to ensure that we give a total application of what we can to the end farmer for his productivity and quality. Now moving towards, so we want the farmer to be profitable and we want to give him a full solution. Now moving towards innovation, I'm happy to share that to honor my late father, he was a man who always looked at technology and practices of the future, that this company has invested into a thought process of Rajan Nanda Innovation Lab, which will continue to invest into newer practices to understand and predict the newer farming conditions and practices of the future. So your company is prepared well in advance in terms of investments, partnership, and product that it will look at in launching in the years to come. Also, I'm happy to share that your company would be one of the first, if probably not in the world, to commercially launch a fully electric tractor by end of the year. This will be a very proud moment for the Indian and for the Indian, as an Indian, and for all the Escortians who are part of our ecosystem. At the end of the speech, I would like to say a few things which constitute the fundamentals on which your company is functioning today. Your company will continue to focus on profitable growth, healthy cash flows, and better return on investment through rigorous prioritization process. We always believe cash is king, and we will always focus on cash returns and cash focus. As chairman of a company, I commit to you that while we will continue to be very ambitious, we will always keep our feet grounded. We would stay hungry, always looking for newer opportunities, but we will also stay lean and fit. I welcome your constructive feedback on all and any areas where you think we should improve or focus more. I assure you, on behalf of my leadership team, that we would be very open to your ideas and suggestions. I also assure you, on behalf of my board, that your company will hold ourselves to the highest standards of corporate governance. While we have global aspirations, but we are Indians at heart, therefore Escorts will always continue to work hard for the nation's interest and for nation building. Thank you for being here with us today, and thank you for being part of a fabulous yet emerging story at Escorts. Thank you very much. That was the end of the speech, and my company secretary informs me that the quorum being present, now may I begin the business matters of today. Notice of the meeting, may I now have the permission of the members present take the notice of the AGM as read. If no one objects, the notice may be taken as read. Before we put the resolutions to vote, I would like to invite a few members to put their questions and invite them to come on or stand up, and we can have the mic come to you. And please, we are happy for you to ask us any questions, any queries, and suggestions of how we can do and better. So I think let Mr. Ajay Sharma call out the names, because he's got the cards with him. Hello. I think everybody will get a chance, you have my assurance, but let Mr. Ajay Sharma give out the name out, and we can have you stand where you are, and the mic will be brought to you. What's the first name? If with the permission of the shareholders, if we can, there is a certain sequence that we need to follow. If I have the permission of the shareholders, let me start with the names that have been given to me in the same order. If it's okay with you, sir. Please carry on. Thank you. We start with the first speaker, Mr. Ravi Shankar Kapoor. Can I have a mic being sent to Mr. Kapoor, please? Thank you. Respected Chairman साहब, Board of Directors और मेरे साथी शेयर होल्डर, सबसे पहले तो मैं 73 एनुअल जनरल मीटिंग की मैनेजमेंट को बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि हमारी कंपनी दिन रात चौगुनी तरक्की करे। चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो मैं शेयर डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपना हार्ड वर्क कर इतनी अच्छी बैलेंस शीट बनाई है, पूरी मैनेजमेंट ने काम किया है और हर शेयर होल्डर को 1 मिनट से पहले उसके ग्रीवेंस का जवाब दिया जाता है। ये कंपनी की सबसे बड़ी खूबी है, शेयर डिपार्टमेंट की खूबी है।
खास तौर पे मैं विनोद दीक्षित जी का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने कंपनी के लिए पिछले 25-30 साल से इतनी कड़ी मेहनत की है। जहां लोगों को 100 बैलेंस शीट चाहिए वहां एक बैलेंस शीट भेज के और जितनी उसकी अटेंडेंस चाहिए उतनी भेज के कंपनी का लाखों रुपया बचाया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और हमारा बोर्ड जो है, आज हमारे बोर्ड के अंदर एक से एक हीरा मोती जैसे डायरेक्टर हैं जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। मुंजाल साहब जैसे लोग भी आज हमारे बोर्ड में हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इंस्पेक्टर चेयरमैन साहब, एक बात और कहूंगा, पिछले साल मुझसे लोगों ने पूछा था कि यार एस्कॉर्ट कंपनी में इतने सीईओ क्यों हैं। आज जब मैंने बैलेंस शीट पढ़ी इस साल की तो पता चला कि बैलेंस शीट में इतने सीईओ होना बहुत जरूरी। आपने जो काम किया है, आपने हर डिपार्टमेंट में अलग अलग सीईओ जो नियुक्त किए हैं, उन्होंने इतना बखूबी काम किया है। आज जबकि इंटरनेशनल मार्केट में और पूरे इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बैड टाइम चल रहा है, हमारी कंपनी ने हर सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट पेश किए हैं। उसके लिए मैं पूरे बोर्ड को, पूरे कंपनी के हर एम्प्लॉयज को धन्यवाद देता हूं। चेयरमैन साहब, मुझे पता चला कि राकेश झुनझुनवाला जी की हमारी कंपनी में सबसे ज़्यादा होल्डिंग है 8.9%। और मुझे ये भी पता चला कि उन्होंने हमारी कंपनी में इतना विश्वास क्यों रचाया, क्योंकि कुछ दिन पहले एक म्यूचुअल फंड के सज्जन उनकी कंपनी में पहुंचे 2 साल पहले। उन्होंने ये बताया कि कंपनी की जो नीयत है वो शेयर होल्डर के साथ है। कंपनी शेयर होल्डर को क्या सोचती है, और जो कंपनी शेयर होल्डर का हित सोचेगी वो हमेशा ही कंपनी तरक्की करेगी। क्योंकि हिंदुस्तान में ये पहली कंपनी थी जो हमने डिविडेंड कैश नहीं कराया, उसके लिए हमें रजिस्टर्ड पोस्ट से कम से कम 4 बार रिमाइंडर भेजे कि आपका ये डिविडेंड कैश नहीं हुआ, इसको कैश कराइए। और यही बात राकेश झुनझुनवाला जी को पसंद आई और उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया। आज हमारी कंपनी का शेयर जो है, मार्केट सारी रिजल्ट जो हर कंपनी के बेकार आ रहे हैं, उसके बाद भी गिर रहे हैं, और हमारी कंपनी ने रिजल्ट अच्छे दिए हैं उसके बाद भी। मगर गीता में लिखा है, कृष्ण भगवान जी ने कहा था कि आप कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। और मैनेजमेंट पे इतना विश्वास है हमें कि मैनेजमेंट ने जो समय के साथ बदलना जरूरी होता है, आज हमारे मैनेजमेंट समय के साथ बदल रही है। आने वाले टाइम में जिस तरह मोदी जी स्पीड वाली ट्रेनें चला रहे हैं और आगे उसका वही भविष्य है, और इसके अंदर जो भी नई चीज में पहली बार कदम रखेगा उसको प्रॉफिट और मार्जिन बहुत ज्यादा मिलता है। थैंक यू। तो आप हमेशा नई टेक्नोलॉजी लेके थैंक यू कपूर साहब, थैंक यू। धन्यवाद। कपूर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना सेहत का ध्यान रखिए, आपको हर साल देखते हैं यहाँ पर। इट्स वंडरफुल टू सी यू एंड माय रिगार्ड्स टू योर वाइफ आल्सो सिटिंग नेक्स्ट टू यू, सो थैंक यू फॉर योर रिमार्क्स। आई कैन अश्योर यू, आपने भगवत गीता के बारे में बताया। हाँ जी, आपने भगवत गीता की बात जिक्र की। आई कैन अश्योर यू वी आर ऑल्सो वेरी वेरी फोकस्ड एंड विल कंटिन्यू टू डू व्हाट नीड्स टू बी डन, सो वी विल बिल्ड ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिमार्क्स। द नेक्स्ट स्पीकर आई लाइक टू इनवाइट इज मिस्टर उर्मिला जैन। उर्मिला जैन जी। गुड मॉर्निंग चेयरमैन एंड स्टाफ। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है कंपनी का और अच्छा रखा गया, उनके लिए मैं सभी से धन्यवाद करती हूँ और सभी शेयर होल्डर से इसके लिए मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करती हूँ। यहाँ पर सर, यहाँ पर मेहमानों से भी बढ़कर शेयर होल्डरों का अतिथि सम्मान होता है, और कंपनी का जो डिविडेंड है वो भी हमारा ठीक ठाक है। रेट भी हमारे मार्केट में 500 के अबव है। मार्केट गिरा हुआ फिर भी हमारी कंपनी ने रेट बनाए रखा हुआ है। और शर्मा जी और हमारे दीक्षित जी शेयर होल्डरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और टाइम पे हमारी बैलेंस शीट वगैरह भेजते हैं। और हमारी मैडम नीताशा मैडम हमारे भाइयों के साथ खड़ी हो तो हमारी कंपनी पीछे हटने का कोई काम नहीं है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है हमारी कंपनी। ऐसी बहनों की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू। Thank you. The next speaker is Mr. Pradeep Sood. आप हर साल आते हैं। यस सर, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच चेयरमैन साहब। पहले तो एक बात कहनी है जी, आप जिस ईमानदारी, लगन और मेहनत से आपके दादाजी ने जो शुरुआत करी थी, आपके फादर उससे 2 कदम आगे निकले और आपने तो साहब कमाल किया। शेयर कहाँ था, कहाँ पहुंचा दिया। सर, आप इसी तरह मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो नेक्स्ट टाइम भी जब भी हम एजीएम में आएंगे कुछ नया देखने को मिलेगा, नया सुनने को मिलेगा। हम आपकी साहब जितनी तारीफ करें कम है। और हमारे जो माथुर साहब हैं, शुरू से इन्होंने, जब ये हमारे सीएस साहब थे, हम शेयर होल्डरों को शुरू से बहुत इज्जत मिली, इनसे बहुत ज़्यादा इज्जत मिली।
और इन्होंने जो इज्जत शेयर होल्डर को मान सम्मान दिया, हम उसके काबिल तारीफ हैं। और हमारे एक मदान साहब हैं, ये इंट्रॉन के टाइम से आपके साथ हैं। हमें बड़ी खुशी है कि जिस ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ आप सब मिलकर काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में भी उसी तरह चलता रहेगा सर। और हमारे अजय शर्मा जी, इन्होंने सब शेयर होल्डरों को बांध के रखा है, बड़ा मेहनत से काम करते हैं। और सबसे ज़्यादा एक हमारे दीक्षित साहब हैं, आज तक किसी भी शेयर होल्डर को किसी तरह की कोई शिकायत आई है, मिनट से पहले उसकी सुनवाई होती है सर। बस चेयरमैन, आप ऐसे ही मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी हम आए और शेयर हमारा ऊंचा मिले हमेशा। I just want to thank you for your remarks, but I want to say that the hard work and all the progress. मैंने और हमारी मैम नताशा मैम जो फर्स्ट टाइम हमें आप लाए हैं, और आगे भी आने वाले टाइम में इसी तरह से आपके साथ जुड़ी रहें, हमें बड़ी खुशी मिलेगी। Thank you. I'd like to recognize that all the good work that's happening is because of the great support I have from my board and from the entire leadership team and all the team members of Escorts. Thank you. The next shareholder to speak is Mr. Bhatia. Thank you. रिस्पेक्टेड चेयरमैन साहब, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेरे दोस्तों, ओके, और मेरे दोस्तों, सर, चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो आपने बहुत ही अच्छे उम्दा रिजल्ट्स दिखाए, जिसकी मैं जितनी तारीफ करूं कम है। मुझे आपके रिजल्ट्स देख के आई एम ए शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी सिंस 1975 when your respected father साहब, your respected grandfather साहब, वो इस कंपनी को देखा करते थे हर 4-5 साल के बाद बोनस शेयर्स। मुझे उन दिनों की याद आ रही है और मुझे इंशाअल्लाह पूरा यकीन है वो टाइम दोबारा आएगा। अंडर द लीडरशिप ऑफ योर गुड सेल्फ, एंटायर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शैलेंद्र साहब जिनको दोबारा बोर्ड में लिया गया है, उसका उनका भी मैं स्वागत करता हूं। जो अर्लियर ही वाज इन एस्कॉर्ट्स, then he joined to Tata Motors, Telco and Hero Motorcar. Anyhow, मैं sir, I'm going to take 4-5 minutes. Please give me chance. Sir, revenue 6,194.4 crore, jump on 23.5%. Such a good sign. EBITDA 733.3 crores, jump of 31.6 crore. Profit after tax 484.9 crores, jump of 40.7%. EPS 40 rupees 58 paisa, jump of 40.7%. Such a marvelous, Mr. Chairman. इसके लिए मैं आपका, पूरे बोर्ड का, सभी एम्प्लॉइज का, यहाँ पे हैं, कहीं भी हैं, जिन्होंने इस कंपनी में कड़ी मेहनत करके दोबारा ऊंचाइयों पे लाए हैं, उन सबको मुबारकबाद देता हूं चेयरमैन साहब। Escorts agri machinery growth of 19.9%, a holistic win. Such, Mr. Chairman, I appreciate it. Total domestic market share 11.8%. सर, एक चीज आपने अभी अपनी इसमें ऑडियो विजुअल का चेयरमैन स्पीच में कही, यू आर गोइंग फॉर ट्रैक्टर्स के लिए आप लास्ट में फुल्ली इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर ला रहे हैं। मैंने जो मुझे पता लगा है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और जो दूसरे हैं उनमें हॉर्स पावर का बहुत फर्क है। इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? थोड़ा हो सके इस पर थोड़ा लाइट डालना सर। शैलेंद्र स्वरूप जी के लिए मैंने कह दिया, मैं फिर उनका तहे दिल से सर आपका मैं स्वागत करता हूं। आप इस कंपनी में दोबारा आए, मुझे पूरा यकीन है ये कंपनी और ऊंचाइयों पे जाएगी। अंडर द लीडरशिप ऑफ योर गुड सेल्फ एंड एवरीबॉडी एंड ऑल एम्प्लॉइज। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Let him speak. Let him speak, please. Let him speak. हाँ जी, बताइए. Go on. सर, एग्री मशीनरी मैंने ऑडियो विजुअल में देखा, हमारी Please, let एग्री him speak. मशीनरी 62 कंट्रीज के अंदर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सच मार्वलस साइन, मिस्टर चेयरमैन, आई अप्रिशिएट। ओके सर, मेट्रो रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन के बारे में कहूंगा, आप बहुत ही इसमें काफी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, काफी एक्सपेंशन कर रहे हैं। सर, व्हाट अबाउट मेट्रो रेल? मेट्रो स्पेंडिंग इन एवरी सिटी, मतलब आई मीन टू से going to be. So I'm happy to answer for the queries that you've raised. But before I answer, I want to state straighten one fact कि Mr. शैलेंद्र अग्रवाल दोबारा बार नहीं आए, पहली बार आए हैं बोर्ड में। तो क्योंकि and in terms of technology that you mentioned for the corporate governance के बारे में you have shown in such a good manner. I appreciate it. Corporate governance और CSR activities Thank you. में आपने जो एक्टिव या सपोर्ट किया है, पॉइंट्स लिए हैं, ये वाकई तारीफ के काबिल है। हमारे प्रधानमंत्री जी इस पे जोर दे रहे हैं और उसने आपने अहम कदम निभाया है। मैं इसके लिए विनोद दीक्षित जी, यस, वन पॉइंट आई फॉरगेट टू से, विनोद दीक्षित साहब को आपने
एमडी बनाया है एस्कॉर्ट सिक्योरिटी के लिए। यू हैव टेकन सच ए राइट स्टेप मिस्टर चेयरमैन। वो बहुत ही ईमानदार और हार्ड वर्कर, कड़ी मेहनत वाले आदमी हैं। यू हैव टेकन ए राइट स्टेप। सो व्हाट यू नीड है एस्कॉर्ट सिक्योरिटीज अंडर द लीडरशिप ऑफ Vinod Dixit and his team. Thank you. will do well. I am Thank you. 100% sure. Thank you. इसका आउटलुक कब तक एक्सपेक्टेड है सर एस्कॉर्ट सिक्योरिटीज का? ये We- थोड़ा वो तो बता दें। हाँ जी। बाकी एक बार फिर मैं चेयरमैन साहब आपका तहे दिल से पूरे बोर्ड का सभी एम्प्लॉइज का जिन्होंने इस कंपनी को इस मुकाम पे पहुंचाया है, आई एम 100% श्योर ओल्ड डेज विल कम अगेन। गॉड ब्लेस यू मिस्टर चेयरमैन। Thank you. I think you've. I'm happy to answer the two queries that you've raised. I'd like to also acknowledge the great work of our R&D team, research and development team. Please allow me to speak. Please allow me to speak. That we have a research and development team sitting here, and we're very proud of the great work that they're doing. Your company, the R&D team and the operating team from EEM. Can you please, the entire EEM team, can you please stand up? Chenu, can you please get your team to stand up? Please give them a round of applause. So I'm happy that we are looking at innovation, and I'm happy that your company has been able to showcase the first working prototype of an electric tractor. While this is an orchard vineyard operation, but as you rightly said, that the electric tractor has a limited usage because the torque requirement in tractors are much more than a car. So we are also thinking, and actually sometime in September, your company is going to be showcasing a first prototype of a hybrid tractor as well. So we are continuously evolving and researching in terms of how we can involve in technology, innovation that can give an impact of a kind to the customer. So we will continue to do that. On the railway, I'm happy to say that we are investing, and we have technology that will give us entry into the metro as well. And there are many other tie-ups that are under lineup, which I can't speak of. It's confidential, but I can assure you that your company is going to be present in the metro as well, and we are going to be growing in that segment. So thank you for your... The next shareholder speaking on the occasion is Mr. Ashok Kumar Gupta. Chairman Sahab, Board of Directors, and my fellow shareholders. Myself, Ashok Gupta. Sir, आपकी कंपनी में आकर के जिस तरीके से चेयरमैन साहब हर शेयर होल्डर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, वो बहुत ही अच्छा लगता है कि हर व्यक्ति अपने चेयरमैन साहब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो सर बैठे हैं उनसे अपनी बात शेयर कर सकता है। इतने अच्छे डायरेक्टरशिप के अंदर हमारी कंपनी गाइड कर रही है और रन कर रही है, ये हमको बहुत फील और प्राउड भी फील होता है कि हम लोग किसी अच्छी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। सर वैसे तो खैर आपने अपने विजुलाइज के अंदर जो ऑडियो विजुअल कर दिया है उसके अंदर काफ़ी कुछ बताया गया है सर, जिसमें सर सबसे मेन तो हम लोग ट्रैक्टर, ECE प्लस रेलवे। सर रेलवे ECE इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, जिसमें आपने शो भी किया कि आप कुछ एडवांस मशीनरीज डेवलप कर रहे हैं जो कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग वाली मशीन्स रहेंगी जो कि हमको काफ़ी सहयोग देंगी सर। जी 17% ग्रोथ है सर इसके अंदर हमारी लास्ट ईयर। तो सर हम ये चाहते हैं कि कंपनी ट्रैक्टर के साथ साथ में तो लीडरशिप है ही है, ECE में भी और ज़्यादा पार्टिसिपेट करे और इसके अंदर अच्छे टेंडर्स दे करके गवर्नमेंट को अच्छी मशीनरीज सप्लाई करे, जिससे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारा सहयोग बढ़े। रेलवे में भी गवर्नमेंट का जैसे आपने अपनी स्पीच में बताया 1,03,000 करोड़ रुपए और उससे भी ज़्यादा प्रोविज़न है खर्च करने का। नई नई ट्रेनें डेवलप हो रही हैं, इंट्रोड्यूस हो रही हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली कटरा तक जाने के लिए 8 घंटे के अंदर ही तैयार हो गई है। तो सर रेलवे में हमारा बहुत कम पार्टिसिपेशन है, 6.4% ग्रो हो रही है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे राइज करने का, तो इसके अंदर भी पूरा अटेंशन दिया जाए। सर आपने अपनी विजुलाइज के अंदर एक ट्रैक्टर का बताया ई बटन सिस्टम। ई बटन सिस्टम के अंदर थोड़ा उस पर प्रकाश डालेंगे, कुछ क्लियर करेंगे कि
ये ई बटन सिस्टम कस्टमर को किस प्रकार से उसको पूरा सहयोग देता है, उसकी डिफिकल्टीज दूर करता है, और दूसरा ई बटन सिस्टम वो हर एक ट्रैक्टर में है या किसी स्पेशलाइज्ड ट्रैक्टर्स में ही आपने प्रोवाइड किया है? देखिए, ये पहली बार हिंदुस्तान में ये बटन और ये फैसिलिटी दी जा रही है। तो सारे ट्रैक्टर जो हम बनाते हैं अभी अपने कारखानों में, पावर ट्रैक और फार्म ट्रैक में, ये ई बटन का ये बंदोबस्त किया है हमने। तो कभी भी किसी वक्त भी कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम हो, वो बटन को दबा सकता है और दबाने से 2 मिनट के अंदर उनको हमारे कॉल सेंटर में उनका कॉल जाएगा और हमारे टेक्निकल लोग उनको सुविधा देंगे। वेरी गुड। मतलब और ऐसा भी है कि पहली बार है कि उसमें स्पीकर भी इनबिल्ट है और मतलब कस्टमर को अपना मोबाइल फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल वेदर प्रोटेक्शन का इक्विपमेंट है ये। तो या तो आंधी हो, बारिश हो, कुछ भी काम करते होंगे ट्रैक्टर में, दे कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट द कॉल सेंटर। तो वो सर इजी फॉल्ट जो होते हैं वही क्लियर कर सकता है या फिर उसके बाद कुछ मेजर प्रॉब्लम होती है तो आप अपना कोई इंजीनियर टेक्नीशियंस को भेज करके उसको? हाँ, पहले हम कोशिश करते हैं कि कॉल सेंटर से जो भी इंक्वायरी आती है हम वहाँ पर उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर वहाँ खत्म ना हो पाई तो हम अपने डीलर को कांटेक्ट करते हैं और हमारे डीलर अपने सर्विस इंजीनियर्स को उन लोकेशन में भेज देते हैं। राइट सर, बहुत ही अच्छा, सराहनीय कदम है सर। वक्त में उसको जियो टैगिंग भी होगा तो हमें लोकेशन भी पता लग जाएगा कस्टमर का, वो कहाँ पर उसका ट्रैक्टर खराब हुआ है। बहुत तो हमारा सर्विस वन वहीं पहुंच जाएगा एकदम। ई बटन क्या बोला जाए, 24/7 बोलते हैं, राइट? केयर बटन बोलते हैं हम लोग। सर इसके साथ साथ ई बटन के साथ साथ आपने ये जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिक के अंदर ही ऑटो इंडस्ट्री को लाना चाह रही है। उसके लिए जीएसटी भी काफ़ी रिड्यूस किया है इस बजट के अंदर और काफ़ी मोटिवेट कर रही है कि भाई आप ऑटो इंडस्ट्री को जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक सिस्टम में ले आए बेस्ट रहेगा। अच्छा सर, इफ यू डोंट माइंड, देयर आर मेनी स्पीकर्स, सो इफ यू कैन प्लीज मेक योर क्वेश्चन शार्प, आई एम हैप्पी टू आंसर। हाँ, और कोई मेरा रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है सर, मैं जो भी है कंपनी के उस रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ सर। ऐसा नहीं है कि बस आपकी, क्योंकि थोड़े बाकी लोग भी हैं बात करना चाह रहे हैं, तो आप पूछिए। और कुछ सर जैसा कि विजुलाइज में दिखाया आपने, 40% आपने अपने रिवेन्यू में ग्रो करा, उसके साथ साथ 40.7%। सर उसके अकॉर्डिंगली प्रमोटर स्टेक काफ़ी ज़्यादा है कंपनी में, उसकी रेशो में आपने डिविडेंड को नहीं किया। अगर डिविडेंड भी आप उसी रेशो में और ज़्यादा हाइक करें तो उसके अंदर बेनिफिट कंपनी को ही ज़्यादा रहेगा सर। तो इन फ्यूचर में इसका भी ध्यान रखेंगे सर। 2 लेडीज डायरेक्टर हैं जो कि हमको कंपनी को मोटिवेट और आगे प्रोग्रेस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा गाइड करती रहती हैं। इनका भी सहयोग बहुत सराहनीय है सर। Shall I now have the? हो गया जी सर, थैंक यू सर। Thank you. We have the next speaker, Mr. Bhupendra Singh. Are there any? चेयरमैन साहब और मेरे साथियों, करीब सारे पॉइंट कवर हो गए। मैं थोड़ी बात आपको करना चाहता हूं कि जो आप मीटिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने किया है, इस तरीके से कोई दिल्ली की और कोई कंपनी नहीं करती। कई कंपनियों में ऐसा होता है कि वो अपने प्लांट के सारे आदमी बिठा देते हैं और पीछे से तालियां बजाते हैं, जैसे जैसे चेयरमैन बोलता है वैसे। और आपने एक जो शेयर होल्डर्स की समस्या सुनी है, ये सबसे तारीफ काबिल है, सबसे पहले। और वो कई चेयरमैन अच्छे बड़ी बड़ी कंपनी वाले एक ग्रुप के कंपनी के वो सुनना नहीं बर्दाश्त करते। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। थैंक यू। थैंक यू। चलिए शुक्रिया, मुझे शर्मिंदा मना करिए, पर आगे बढ़ते हैं। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया। चलिए सर एक चीज आपको एक सुझाव देना चाहूँगा जी। सर राजन नंदा जी ने इस कंपनी को खड़ा किया, इस कंपनी को इतना बड़ा बनाया,
लेकिन एक चीज आज हम बोल रहे हैं कि उनकी इस मीटिंग के अंदर तस्वीर जरूर होनी चाहिए, एक स्टैचू या तस्वीर जरूर होनी चाहिए। मेरी गुजारिश है आपसे कि नेक्स्ट टाइम ऐसी भूल ना हो। उन्होंने इस कंपनी को बहुत ऊपर लेके गए और आपसे गुजारिश है कि उस चीज़ को भूलें नहीं, अपने पिताजी को भूलें नहीं और उसको जिंदा रखें अपनी यादों में। थैंक यू सर। देखिए, मेरे पिताजी का आशीर्वाद और भावना में हर सुबह और हर वक्त अपने पास रखता हूँ। तो उनका तो तस्वीर तो ही है, बट उनकी भावना और उनका आशीर्वाद हमारे अंदर ही है। उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया। The next speaker. जी हाँ जी, दिया आपने जी। It's a pleasure to meet you, really. If other shareholders who don't know, he worked in Escorts for 30 years and is happy to now he's a shareholder, so wonderful. जैसे आपका बैलेंस शीट बनता था जी आपके पिताजी के टाइम, और उसमें सबसे पहले दादाजी की फोटो होती थी एचपी नंदा साहब की जी। तो मेरी ये सजेशन है कि एचपी नंदा जी जिन्होंने खड़ा किया ये, ठीक है, उनकी फोटो पहले होनी चाहिए, उसके बाद आपके डैडी की फोटो होनी चाहिए, देन फिर आप लोगों की फोटो। थैंक यू। ठीक है, विल कंसिडर वो क्योंकि हमारे पास बैलेंस शीट सारी पड़ी है जी। मैं आपको दिखा सकता हूँ श्योर, कि उस हिसाब से आपकी ये इतनी मोटी बैलेंस शीट बनती थी आपकी। विल कंसिडर। थैंक यू सो मच। The next shareholder to speak is Mr. Parminder Singh. Are there any new points that you have? Please raise, because there are many speakers and we want to give them a chance. अगर आपके क्वेश्चन जो आपने लिखे हैं यहाँ पर अगर आंसर हो गए, give other people a chance to speak. Sir, good morning everyone. And very first I will say outside arrangements were good, and I believe our secretarial department, they are very much active and they are there to resolve each and everything. Thank you. Sir, regarding working, results are very good. We are very happy with that. But sir, there is always scope of improvement. Absolutely. And as a shareholder, as an investor, we feel like we should have number of interim dividends. We should enjoy right issue. We should enjoy bonus, and I believe very soon we're going to enjoy all this in the company. And sir, regarding this working, you have mentioned about the Atom tractor. So what is the cost of it, and when it was being launched in the industry, in the company? So firstly, I'm happy to share that the R&D team is sitting here, that this project from concept to execution took 18 months. Okay. One of the fastest. We followed the processes of world-class processes. It's a very new platform called a compact platform. Okay. And as I said in my speech, that this tractor has become a craze in the areas of where we have launched it. And also in the export market, this is one of the fastest growing tractor model. And the volumes in European market and continent increasing a lot. And we are going to be launching more variants. Okay. And I invite you, if any of the shareholders are interested to come and visit our manufacturing facilities, if they want to come and see our new products, you can give your name to the company secretary. Sure. Yeah, we are happy to invite you, and you can see this product lineup. Sure. So we'll continue to invest and add more variants to this platform. So what is the cost of it in Indian? So depending on the horsepower, so it can be from 3.6 lakh, it can go to about 4.6 lakhs. So, I believe, in an Indian sector, market, not many people go for small farmland and all. So one can, it's a, if we come up with a good ad for this in newspaper or in television, yes, we can have a great sales for the product. Certainly, we will consider that. And sir, regarding, sir, how much we are paying to our auditors and cost auditors, sir? We will share that information with you. Okay, Thank you, sir. And sir, what about, sir, this, you have given such a good audio visual. Gee. So can we go for even a webcasting of the company, as it is very professional company? Actually, in my beginning of the speech, I had mentioned that this entire proceeding is being recorded. The entire proceeding is under webcast. Okay. And this entire, as I was speaking in the chairman's speech, it was being viewed in Facebook, in YouTube. And a lot of investors from Mumbai, our foreign financial institution investors, have seen my speech and are seeing you speak as well. Chalo, So very fine, everything sir. is live. Very fine, sir. So we are very happy with the company working. Thank you so sir. much. Thank you very much. Now we come to the next speaker, Mr. Tejinder Singh. चेयरमैन साहब, मेरे भाइयों शेयर होल्डर्स ने पहले सारी चीज़ों का आपको सारी चीज़ पहले हम डिस्कस कर चुके हैं. मैं कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं जो आपके सामने लाना चाहता हूं. एक्चुअली हमारे यहाँ पर जो आपके साथ जो लिंक है कार्वी ब्रोकर है, कार्वी के साथ कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही है.
जैसे कुछ मेरे डीमेट कुछ अकाउंट जो मेरे को डीमेट कराने थे फिजिकल शेयर से, 7-8 टाइम्स मैंने उनको कॉल किया है, बार बार वो मेरे को रिटर्न भेज रहे हैं। मेरा नाम तेजिंदर सिंह है और जो अकाउंट है मेरे पास तेजिंदर सिंह के नाम से है, और जो फिजिकल शेयर है वो तेजिंदर सिंह मारवा के नाम से है। मैंने डिक्लेरेशन दे दी, एफिडेविट दे दिया, जैसे अदर कंपनीज में मैंने करवाए हैं। 15-20 टाइम्स इन्होंने मुझे वापस भेजे हैं। मैंने 5-6 टाइम्स आपके कॉर्पोरेट ऑफिस यहाँ पर विजिट किया है। यहाँ पर कुछ आपके एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी है, लेकिन कार्वी के साथ मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है। अभी एंटर करते हुए मेरे से मेरा आई कार्ड मांगा जा रहा है, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ की क्या जरूरत है सर? मेरे सिग्नेचर है, सिग्नेचर वेरीफाई करो, मुझे एंटर करो, उसकी कॉपी करा के लाओ। फोटोकॉपी की मशीन आपकी खराब है, तो क्या ऐसा सिस्टम होना चाहिए? डिजिटलाइजेशन का जमाना है, पीएम साहब कहते हैं सब चीज सिंपली होनी चाहिए, और आपके यहाँ पे लेंथी प्रोसेस बनाया जा रहा है। तो थोड़ा सा इसको सर प्लीज, मैंने अभी इन्होंने मेरे को एश्योरेंस दिया कि आगे से ऐसा नहीं होगा, इन्होंने जाके रिजॉल्व किया है। तो सर कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं, और कुछ आपकी सारी फिगर्स मैंने देखी है, सब 20% जंप, 30%, 40%। सर शेयर होल्डर्स का भी कुछ ख्याल रखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोपोर्शनल रेट में शेयर होल्डर्स को आपने कुछ नहीं दिया। शेयर 1000 रुपए से शेयर जो है आके 475-80 रुपए में बंद हुआ है। तो सर मैं हर चीज ग्रो हो रही है और शेयर का प्राइस डाउन हो रहा है, ना कोई बोनस ना कोई। सर पुराने वाले दिन सब शेयर होल्डर्स। I welcome and I do take note of your pain points of Karvi. Karvi sir, Secretary and Vinod, we will look into that. Second, they have taken my number also, and they have showed me that they will personally look into this and resolve. I can assure you that your company's fundamentals are very strong. We have a long-term vision. We have looking at 2022. We are making our company and building good partnership with global partners also. Sir, but I know, but I don't know what is the reason to decrease the share price. So it is not only true to Escorts. Today, if you look at the sentiment in the stock market, it is true for many automotive company stocks that are having those negative movements. एस्कॉर्ट गोइट्जे का सर, मैं भी बहुत पुराना शेयर होल्डर हूँ, काफी पुराना, 30 साल 20 साल पुराना। बचपन में छोटा बच्चा होता था, पापा के साथ स्कूटर में आता था, और आज जो है मैं खुद इतना 30-35 साल का मैं भी यहाँ पर हूँ। ये सारे साथ के लोग हैं मेरे। लेकिन सर मेरे को दो चीजों का आपसे एक चीज समझनी है। शेयर्स में आपकी सारी चीज का जंप, हर चीज का जंप है, ठीक है, ना कोई बोनस ना कोई कुछ, मतलब समझ नहीं आया कि क्या। और शेयर का प्राइस 1000 रुपीज से सर 470, हर चीज इंक्रीज हो रही है, हर चीज। मार्केट में और भी शेयर्स हैं मैडम, और भी शेयर्स हैं, सेंसेक्स बढ़ रहा है, निफ्टी बढ़ रही है, तो ये क्या चीज है? फिगर्स तो इतनी अच्छी शो हो रही है कंपनी की, मेरी कंपनी की फिगर्स इतनी अच्छी शो हो रही है, लेकिन हर चीज। सर कुछ उसका थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया जाए, जो मैं आपको तरफ बोल रहा हूँ। और एक कार्वी का सर प्लीज थोड़ा सा पर्सनली इसको एक बार चेक किया जाए, कार्वी के साथ बहुत प्रॉब्लम आ रही है। पॉइंट इज नोटेड, आई कैन अश्योर यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। Okay, can I have now the last speaker now? Sir. We have the only last speaker left. Bhutani sir, एक second sir. Okay, we have last two. We have last two speakers. माननीय चेयरमैन सर, हमारे मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट हैं। पहली चीज ये कि हमारे पास जो हम इंडियन रेलवे, सॉरी आई कैन हियर यू, इंडियन रेलवे के साथ, इंडियन रेलवे साथ, जहाँ वहाँ पे हमारा क्या आगे हम टाइप करने जा रहे हैं, और दूसरा क्या है क्या हमारा कंट्रीब्यूशन जो आगे हम उसमें क्या कंट्रीब्यूशन जो हम सप्लाई में जो हमारी कुछ पार्ट्स हैं या कुछ है उसमें हम क्या इसमें आ रहे हैं। नंबर 2, मेट्रो रेल के अंदर भी हमारा जो है क्या So in railway, as I said, we are developing a lot of technology products in house, whether it's in couplers, shock absorbers, braking systems. There are newer product segments which we are already developing, which I can't speak right now, it's sensitive, which will also enormously open up newer segments in terms of opportunity for the existing train systems, even metro, wagons. We're also looking at opportunity for exports. So there are multiple products and multiple newer segments within the railway across the segment of where the opportunity we see, we are developing this product technology. And you can see what railway division was 4 years back. We were approximately about 180 crores. This year, you know, we are going to be, it's an X to the power of 3 or 4. So we are robustly growing, 25 to 28% compounding growth year on year. And I'm quite confident that we will have good growth coming in the future as well. सर, हमने ट्रैक्टर में
गत वर्ष के अंदर 96,000 जो Sorry? 96,000 ट्रैक्टर जो है लास्ट ईयर हमने जो हाँ जी 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 इस साल के अंदर जो करंट ईयर चल रहा है 19-20 इसमें हमारा क्या टारगेट रहेगा, क्या हम देखिए आई कांट गिव एग्जैक्ट नंबर बट एज आई सेड इन माय स्पीच दैट from FY16 to FY19 the industry has grown enormously, 60% growth. 60%. I mean, it's historically, we nearly touched 800,000 tractor TIV. And I think in life it's theoretical and it's unexpected for anything to continuously grow. We were expecting this correction. We are a cyclical business. So we have seen a slowdown for the last 4 months as all the other automotive industry also are witnessing and seeing that. So in my view that is that the correction will happen, but your company is looking at how it's going to maintain good EBITDA margins. We are looking at increasing market share in areas of opportunity, as I mentioned in my speech, in markets like the southern part of the country or the central part of the country. So we are putting our best efforts to look at how much best volume we can do and continuously grow in our margins as well. I can't give you an exact number, but let's see. We still have 9 months ahead of us. Can we have the next Thank share? you. सर एक लास्ट चीज है, जिस बिजनेस मॉडल को लेकर हमारी कंपनी जो रखा बिजनेस मॉडल जो हमारा इतना अच्छा बनाया है, जो बिजनेस मॉडल हमारा है, जो एस्कॉर्ट्स नाम लेके हम चले हैं हर जनहित के लिए जो कंपनी का नींव रखी गई, क्या कारण है सर? अभी मेरे साथी ने दर्द की व्याख्या की कि हमारे को जो रिटर्न है पिछले 10 साल के अंदर रिटर्न इतनी जो आनी चाहिए थी वो रिटर्न नहीं मिली। और आपकी कंपनी और है, मैंने देखा नॉर्थ इंडिया में जितनी भी कंपनी है जो फाइनेंस कंपनी साथ में लेके चल रहे हैं, जैसे आपकी फाइनेंस कंपनियां और भी कंपनी फाइनेंस लेके चल रहे हैं, उसमें बड़ा बुरा हाल है। वो क्यों नहीं उठ रही है, वो उसमें क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? आपकी ट्रैक्टर इंडस्ट्री में आप क्यों नहीं फाइनेंस के अंदर भी कुछ जान फूकते हैं ताकि उसमें भी कुछ जान आए, इन्वेस्टर को कुछ उसमें कुछ भरपाई हो उसकी? देखिए all I can say is that your company is very focused. The fundamentals of the company is very, very strong. Even while the markets may be on a subdued mode in terms of sentiments which are not as positive as they were 2-3 years back, we are continuing to invest into new products. We are building on the fact that we want to do a better penetration for both the brands in the Indian market. As I mentioned to you, we have gone with a partnership with a company like Kubota. So we are also looking at international market expansion. So we are continuing to build what we believe will throw and increase the revenue of this company for the years to come. Now, what is happening in the stock market? What is happening in the share price? Why the nervousness in terms of liquidity because of the NBFCs? Those aspects we cannot control. What we can control is technology, being efficient, ensuring that we have the right processes. We're ensuring to meet the customer requirements, ensure that we are a company and a brand which is preferred by the customer. So in my entire team is looking at that aspect of how we can gain the trust and give a customer a first choice when it comes to our brand offering. So please have faith. I think your company, with your blessings, has done well in the last 5 years. I believe that the current sentiment in India, for whatever reasons, there are micro issues, I'm sure will pass. And it's a matter of maybe 18 to 24 months, but we have a very strong future ahead. And we will do our best efforts. So thank you very much. Yeah. So I have a last speaker because I'd like to close the meeting because if there are any points that have not been made, I would ask you to please speak. Otherwise, I would like to close the proceeding for today's meeting. The last speaker that we can entertain, Mr. Yashpal Chopra. Sir, Yashpal Chopra. I am the oldest shareholder among all the people sitting over here. My folio number is 20,000. Please allow him to speak. Please allow him to speak. Boliye aap. No, go ahead. Please allow him to speak. Please allow him to speak. आप करिए, आप बोलिए. Sir. Can we have your attention, please? Sir, I will definitely not like to repeat the points, whatever has been already said. So, because repeating the points is just showing the lamp to the sun. So there is no need to just go for the statistical data and all that, and just to tell that how much percentage and all that, because all these results are compiled by you. And if we are just going to show you all those things, that means we are just showing the lamp to the sun. So, sir, I am very much proud of the team you are holding around. So they are the stalwarts of the industry. Our Mr. Munjal Saab, Samina, I have got a great regard for him because he is the pioneer in the auto industry, sir. And our Mathur Saab, I know him for the last more than 35 years.
So I know that he's a gem for the company, sir. Sir, I would not like to talk much about this many of government company's performance because company has achieved the historic performance of the year. This is a historic performance, and we are proud of that, sir. Thank you. Sir, regarding corporate governance, they are excellent. Everybody from top to bottom, from Mr. Rajesh Sharma, from Mr. Madan to Mr. Kishan, everybody is an amicable person, and we are proud of them. But Thank sir, you very much. now I have to come. I have to give you some suggestions, sir. My suggestions are that you have inherited a very, very good sanskar from your fathers. That sanskar of calling your employees as your colleagues, and you are valuing their values. And by virtue of the value, our late Rajananda Saab, the man with the golden heart, he had elevated Mr. G.B. Mathur from the company sector to the director level. So this is the thing, and you are following the same thing. And now you are just elevating Mr. Charinder Agarwal to the same level. Thank you very much. On the same pattern. Chopra Saab, So that is a very I big want to thing. thank you. So with that, I would like to now finish. If there are any Q&As, we can meet you off the meeting. Yes. Let me please continue to Yes, proceed. I have to make some Okay, thank you. suggestions, which I will just make it And to you. Chopra Saab, it's There's a no pleasure problem. to see you. When I see you, you remind me of my grandfather. And I want to thank you for taking the effort of coming all the way to the AGM. And not only you, but for many shareholders who make the effort of coming to our AGM. I respect that. And I also want to acknowledge that this is the relationship and trust which is the foundation of this company. Sir, I have to And make I some can assure you suggestions to that we will do our to you best only. to nurture and build on the relationship. Thank you very much. Now with the Q&A being over, if there are any Q&A that you may have, sir, I'm happy to stay back for 10 minutes and I will meet with you along with my colleagues. So now may I proceed with the e-voting. The amended Companies Act of 2013 has provided an option to you shareholders to casting the vote through e-voting process. The entire procedure for this purpose had been stated in detail in the notice of this meeting. I am confident that you have gone through the same. The option for e-voting was exercised by shareholders during the period from 24th to 26th of July 2019. And the company has appointed Mr. Jayant Gupta, practicing company secretary, as scrutinizer to supervise this voting process. The voting results, together with the scrutinizer's report, shall be placed on the company's website and also on the website of Karvi within 3 days of conclusion of the voting of the annual general meeting. A communication to this regard will also be sent to the stock exchanges. You are now requested to cast your valuable votes in the respect of items stated in the notice and drop your duly compiled ballot forms in the ballot boxes. I now announce the conclusion of your 73rd annual general meeting of the company. Thank you very much for coming, and we see you next year. Thank you very much. Thank you very much, shareholders. Thank you. Thank you, sir. मैं आ रहा मैं आपको मिलता हूँ आप आ जाइए ऑफिस में आइए आप I have told you, all the shareholders who want to come to the factory visit or see our products, give your names to the company secretary. You are most welcome, and I will see you when you come to our premises. Thank you very much, sir. Thank you. नहीं, हमारे को शेयर होल्डर्स ने बोला है कि दे वांट टू हैव अ फैक्ट्री विजिट समवेयर इन नवंबर एंड और दिसंबर. तो मुझे कन्वीनियंट टाइम हम लेके आप सबसे विल हैव अ विजिट अराउंड दिसंबर फर्स्ट वीक. इंटीमेशन भी भेजेंगे एंड इट विल बी ऑन अ सैटरडे सो दैट एवरीबडी इज कंफर्टेबल ऑन दैट पार्ट. हम सैटरडे को करेंगे सो दैट एवरीबडी इज कंफर्टेबल ऑन द डेट पार्ट ऑफ इट. बाई पोस्ट नहीं, हमारे पास आपके सबके मोबाइल नंबर्स हैं. विल बी इन पर्सन कॉन्टैक्टिंग यू इन पर्सन. चलिए ठीक है, पॉजिटिवली उन्हीं को हमारा कनेक्ट जाएगा. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. This is a long